जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके ऑनलाइन चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग सेफ होंगे, अपने अपने घरों पे होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 9th। लो, लेट्स स्टार्ट विथ योर सिलेबस. Dear students, your syllabus of class 9th is the first chapter is matter, its nature and behavior. The unit is matter, nature and its behavior. Now we will discuss about the nature of matter, particles nature, basic units, mole concept, structure of atoms. These are the your syllabus for your kind information. डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग मैटर क्या होता है, मैटर के टाइप्स क्या होते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन मैटर इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज सॉलिड, हाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसेस, गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. तो ऑल द इंटर कन्वर्जन प्रोसेस and the detailed introduction about solid, liquid, gas and Bose-Einstein condensate, as well as about the plasma we have studied here. डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स का नेचर क्या होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. अब हम एक एक यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है मैटर इन और सराउंडिंग अस, इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे. मैटर क्या होता है आप जानते हैं, जो स्पेस एक्वायर करे, जिसका फिक्स वॉल्यूम हो, ना भी फिक्स वॉल्यूम हो, लेकिन अगर वो स्पेस एक्वायर करता है तो वो मैटर है. जनरली वी कैन से दैट. मैटर कितने टाइप के होते हैं? जनरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैटर 3 टाइप के होते हैं, यू नो वेल, सॉलिड, लिक्विड, गैस. बट we know that in your syllabus in NCERT, two other types of matter are also given, that is Bose-Einstein condensate as well as plasma. We will discuss about detail in this chapter, and how we will convert the solid into liquid, liquid into gases, and its uses and application we can study here in first chapter. In chapter second, we can study about the physical and chemical changes. What is the physical and chemical properties of matter? What is element, compound, mixture? What is homogeneous? How we can distinguish between the homogeneous and heterogeneous mixtures? What is about the solution, suspension, colloidal solution? Just like example, milk is an example of colloidal solution. Our blood system is also an example of colloidal solution. So dear students, in matter around us, in the second chapter we have studied about all the properties of the matters and its system, elements, compounds, mixture, methods of separation and components of mixture, solution, suspension and colloidal solution. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ऑल अबाउट दिस चैप्टर फर्स्ट एंड सेकेंड गिव्स एन आइडिया अबाउट the thinking about what is matter, how we can distinguish between the physical and chemical changes, studied about the matter is our surrounding and is matter around us pure. We can always think the points that what is matter and how it can be classified as its properties. So first and second chapter is based on matter top property. When we will study about the all about the matters, then we have started the atom and molecules. Atom and molecules are the basic chapters for your syllabus, because in class 10th and 11th 12th all the chapters of chemistry acquires atoms and molecules. That's why we have studied about the atoms and molecules. The chapter atom and molecules concept is based on the basic what is the atom, how is the law of chemically combination, how an atom combines with each other by chemical bonding, the what is the bonding, that is bond transfer of electron और gain of electron. तो हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग भी यहाँ पढ़ेंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे, एटम्स पढ़ेंगे, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आयंस क्या होती हैं, वैलेंसी क्या होती है, नेम ऑफ द फार्मूला ऑफ एनी कंपाउंड्स, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपाउंड्स, ये चैप्टर थर्ड में पढ़ेंगे. और चैप्टर फोर में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. स्ट्रक्चर ऑफ द एटम क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, मीन्स द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम. किसी एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है. हाउ इट विल बी डिस्कवर्ड, हाउ इट इज डिस्कवर्ड, the experimental process, all the properties or whatever ever you think, all the properties are discussed here. The structure of an atom, atomic numbers, what is atomic numbers, mass number, distribution of electron in various orbits, valence cell, valence electron, all the basic concept about the structure of atom we have studied here. So dear students, next video lecture we can study about your detailed concept of
chapter first, matter in our surrounding us, that is the characteristics of matter. I hope all of you are understanding about your all the syllabus of chemistry. That is 4 chapters are here. 2 chapters related with matters and 2 chapters related with atoms. So first of all, again, to all of you, thank you for watching my video. And dear students, today evening lecture we will discuss about the matter and its topic. And also I have asked to you that what is the syllabus of your chemistry. So be pointful, be attentive, and prepare in notes from next video lecture. Dear students, from next video lecture I will provide your video lecture on basic boards, and with the help of SRPS team I will provide you all the basic platform of chemistry, basic knowledge idea. We will study all the basic concept of chemistry for further detail, that is class 11th, 10th, 12th, all the sections, and other furthermore you can study here all the basic concept, so you can learn easy way the further classes of chemistry. So dear students, get excited. I know all are you excited to study the chemistry from me. From tomorrow, yeah, from next video lecture I will provide you all the videos from board side, and we will also interact with live classes. Thanks for participating, dear students. Thank you.